हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर क्यू क्लासेस। आज मुझे नहीं आसी इंग्लिश रो 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन नाउन्स एंड वर्ब्स। तो प्रत्येक क्वेश्चन 4टी ऑप्शन अच्छी, आपण मैंने आंसर करने चेष्टा करूँ। ता सहित आपण मैंने निश्चित भाव आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को दबाई दिंतु। देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी, गीता गेव मी अ डैश ऑफ इनफॉरमेशन अबाउट रीता। तो आप चेष्टा करूँ कहवाई, गीता गेव मी अ डैश ऑफ इनफॉरमेशन अबाउट रीता। आंसर कौन हम? शीट ना पीस ना ब्लेड ना यूनिट। आंसर कौन हम? चिंता करूँ। गीता गेव मी अ डैश ऑफ इनफॉरमेशन। देखो आंसर हो अ पीस ऑफ इनफॉरमेशन। ठीक अच्छे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाउस इज फुल ऑफ ओल्ड डैश। कौन हम? फर्निचर्स ना फर्निचर ना सम फर्निचर ना डी एनी फर्निचर। कौन हम आंसर? चिंता करूँ। देखो आंसर हो ओल्ड फर्निचर, कारण फर्निचर्स हुए ना, सम फर्निचर भी हेनी, तेणु आंसर ये हो फर्निचर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 को। द डैश ऑफ काश्मीर इज चार्मिंग। कौन हम आंसर? द डैश ऑफ काश्मीर इज चार्मिंग। सीन ना सीन्स ना सीन्स ना सीनेरी। कौन हम? चिंता करूँ। आपड़ जानते सीन कि सीन्स ये हेब ना, सीन्स हेब ना, ये आंसर हम ऑप्शन नंबर डी सीनेरी। द सीनेरी ऑफ काश्मीर अ चार्मिंग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फादर रीडिंग डैश नाउ प्लीज बी साइलेंट। कौन हम? फादर इज रीडिंग डैश नाउ प्लीज बी साइलेंट। कौन हम आंसर? सम पेपर ना अ पेपर ना पेपर्स एनी पेपर। ट्राई टू गिव द आंसर। So the answer will be B, a paper. Father is reading a paper now. Please be silent. Okay, moving on. Question number 5. I need some dash to do the calculation. So what will be the correct answer? Papers na paper, a paper, of paper. I need some dash to do the calculation. चिंता करो तो अपन देखो ये आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पेपर। I need some paper to do the calculation. Okay, moving on. Question number 6. Mr. Das is the best when he teaches dash. कौन हम? ऑप्शन ए दे पोएम, बी पोएट्री, सी एनी पोएट्री, डी सम पोएम। प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर। मिस्टर दास इज द बेस्ट व्हेन ही टीचेस डैश। कौन हम आंसर गेस करूँ। देखो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोएट्री। मिस्टर दास इज द बेस्ट व्हेन ही टीचेस पोएट्री। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द चाइल्ड हैज ए डैश ऑफ ग्रास ऑन हिज लेफ्ट फुट। कौन हम आंसर? शीट ना पीस ना ब्लेड ना चंक। कौन हम आंसर? चिंता करूँ। 4टे ऑप्शन कोटा ठीक हम? द चाइल्ड हैज ए डैश ऑफ ग्रास ऑन हिज लेफ्ट फुट। ये ऑप्शन नंबर सी ब्लेड। देखो सांग मैंने प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे इंग्लिश क्वेश्चन मस्ट आसे। से जो एग्जाम हो जेटी हो ओएसएससी बा ओएसएससी स्टाफ सिलेक्शन जेकोसी एग्जाम हो निश्चिंत भाव में इंग्लिश क्वेश्चन आप पाइबे। सो बी प्रिपेयर्ड एंड आम सहित आपण प्रिपरेशन कंटिन्यू रखु। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आसन जा। द प्लूराल काउंटेबल नाउन ऑफ गुज इज डैश। गुज रो प्लूराल काउंटेबल नाउन कौन हम? गुजेस ना गुज ना गीज ना गीजेस। प्लूराल काउंटेबल नाउन ऑफ गुज। देखो ये आंसर हो ऑप्शन नंबर सी गीज। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दिंतु। द प्लूराल नाउन ऑफ सिलाबस। सिलाबस कौन हम? ऑप्शन ए सिलाबस ही ना सिलाबसेस ना सिलाबेसेस ना सिलाबी। कौन हो आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 रा देखो आंसर हम ऑप्शन नंबर डी सिलाबी। ये प्लूराल फॉर्म सिलाबस कौन? सिलाबी। स्पेलिंग देखी दिंतु। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द सिंगुलर नाउन ऑफ करिकुला। करिकुलार सिंगुलर नाउन कौन हम? ये आप जापे कौन हो? आम सब कहू ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर करिकुलम। ठीक अच्छे। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। फाइंड आउट द ऑड मैन। 11 नंबर क्वेश्चन। बुक गार्डन मदर रोड टेलीविजन बॉय ना राइट फिल्म। देखो ये ऑड वन आउट देती
तेणु आमर ये आंसर हो राइट फिल्म। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 दिला डैश शुड टेक केयर ऑफ वन्स हेल्थ कौन हम। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर ही ना शी ना यू ना वन। ये करेक्ट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी वन शुड टेक केयर ऑफ वन्स हेल्थ जड़े निजर स्वास्थ्यर जत्न नेबा उचित। तेज देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो दिस इज अ लंप ऑफ डैश कौन हम कलेक्टिव नाउन अ लंप ऑफ डैश कोल ना फर्निचर ना ऑयल ना सुगर। सो व्हाट विल बी द आंसर। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोल। दिस इज अ लंप ऑफ कोल ठीक अच्छे मन रखु यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14 डैश इज अंडर द टेबल कौन हो आंसर डैश इज अंडर द टेबल 14 शूज ना शू अ पेयर ऑफ शूज ना नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर कौन हो देखो ये आंसर हो पेयर ऑफ शूज देखो शूज तो हेनी पेयर ऑफ शूज ही हम करेक्ट आंसर अ पेयर ऑफ शूज इज अंडर द टेबल राइट। सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 15 अ बार्किंग डैश सेल्डम बाइट्स आप जानते हैं अ बार्किंग डॉग ठीक अच्छे अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स भोकला कुकुर कामुड़े ना आमर कथार भी अच्छी गरजिला मेघ बरसे ना तेणु इंग्लीश रे एमती कहुए अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो अ डैश इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स कौन हम बॉय ना जेंटलमैन ना पर्सन ना मैन। देखो आपको सठिक नाउन बा भर बाचियार अच्छे देखो अ डैश इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मैन ठीक अच्छे अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स ठीक अच्छे। ये कंपनी अर्थ कौन फैक्ट्री बा इंडस्ट्री नुह कंपनी अर्थ फ्रेंड बा कौ भाया सांग आप रखुच्च। क्वेश्चन नंबर 17 देखो एन एम्प्टी डैश साउंड्स मच कौन हम ये भी आप निश्चित भाव शुणी थे एन एम्प्टी वेसेल एन एम्प्टी वेसेल साउंड्स मच। क्वेश्चन नंबर 18 देखो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ देखो अंडरलाइन भूल जारी जाए ऑनेस्ट जो अंडरलाइन दे दूसरी आप कहतु ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ कौन कनेक्ट अ कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन अ कलेक्टिव नाउन या ऑप्शन नंबर डी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ठीक अच्छे ऑनेस्ट आमर गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो द नाउन फॉर्म ऑफ वाइज वाइज रो नाउन फॉर्म कौन हम वाइजनेस वाइजफुलनेस ना विस्डम ना वाइजली चिंता करूँ कौन हम द नाउन फॉर्म ऑफ वाइज द नाउन फॉर्म ऑफ वाइज कौन हम। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्डम राइट। सो आज लास्ट क्वेश्चन देखो द नाउन फॉर्म ऑफ पोलाइट पोलाइट कौन हम पोलाइटली ना ऑप्शन नंबर बी पोलाइटर ना पोलाइटनेस ना पोलाइटफुल। ट्राई टू गिव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 द आंसर विल बी पोलाइटनेस ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे। तो फ्रेंड्स आज ये मुझे 20टा एमसी को आप डिस्कसन कली आपने प्रैक्टिस करूँ एमती आहरी प्रैक्टिस सेट आम चैनल आपने पाइबे मो प्ले लिस्ट रे एंड आई होप यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज बी सपोर्टिव। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बाय बाय।